So FBI checks are being initiated. What's going to happen? Deep impacts. It's going to affect any person who has a green card, citizenship, or any other application pending. Impacts इसके क्या होंगे? Even on those people who have had their background checks, will go through it again. We'll have to talk about it, and we'll have to see what is going to be the impact. It's going to be a detailed one. Stick around for that. We're talking about the FBI checks. अब normally background checks होते हैं, and they do that for every case. What we do fear कि ये जो नए FBI checks हैं, उनका impact क्या पड़ेगा? So in all of your other cases, if you are in the US, what the government does is वो आपके fingerprints लेते हैं, photo लेते हैं, and they check within their own database. That's it. वो कहते हैं कि US के हवाले से आपने DS-160 फॉर्म भरा था, कोई और वीज़ा अप्लाई किया था, कभी भी किया था, but all pertaining to the US only, हम उसी को लेंगे. But FBI check is a much bigger one. What does that mean? कि आपने अपने US के मामलात में तो जो लिखा सो लिखा, because again this is part of the other series that we did on the background checks and on maintaining your records. यहाँ पे they are going to double check it और cross check it worldwide. तो आपने अपना दुबई का कोई वीज़ा फाइल किया था, आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ किया था, आपने कनाडा के लिए कुछ किया था, और उसमें कुछ और लिखा था और यहाँ कुछ और लिखा. Because the favorite thing which they like to do is have contradictions. कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ. So now what they'll do is through this FBI check, they'll say, okay, when you applied for your visa or your immigration in Canada, उसमें आपने लिखा था कि मेरी ये एजुकेशन है, या आई कैन स्पीक फ्रेंच, या मैंने ये काम भी किया. यहाँ पे क्या हो रहा है? या आप किसी और मुल्क में थे, यू ओवरस्टेड, यू वर डिपोर्टेड, you had anything done against you, that is going to count for things when you are doing your case in the US. आपने नहीं किया, आपके नाम से मिलता जुलता किसी और ने किया, you are going to be affected. So and we had this identity issues coming up. We came across a case जहाँ एक साहब who has a very neat and clean history based on what he says, कि वो जब भी US आना चाहते हैं, he's not allowed to. He lives in a different country, and for privacy reasons I won't mention quite a few details, कि वो अपने भी western country में जब जाते हैं तो he's rather questioned. बल्कि इस हद तक हुआ है कि उनके कुछ और दोस्त या अजीज़, उन्होंने जब कुछ पिटिशन फाइल करने की कोशिश की तो उनके पास लोग आए हैं चेक करने के लिए कि आपका इन साहब से क्या रिश्ता है. Things can go really wild. It's based on your social profile, on things that you have done, things that you have contributed to. तो कई दफ़ा ये भी होता है कि हम कहते हैं कि जी ये फ़लाँ फंड रेज़र है, ये फ़लाँ चीज़ है, इसमें पैसे दे दो, इसमें पैसे दे दो. We need to determine its veracity, its truthfulness, कि वो इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है पैसा. Because the government can always say कि आपका ये पैसा, आपकी ये जो contribution गई थी, it was used for some nefarious purposes. It was used eventually for something which is hatred. So ensure कि आप अपना पैसा, वक्त, resources जहाँ कहीं भी लगा रहे हैं, वो properly address हो रहा है. It can be in the shape of your things as well. तो कई दफ़ा हम ये करते हैं कि एक चीज़ आई, हमें अच्छी लगी, हमने forward कर दी. Well, if we don't like it, if we don't agree with it, we don't even need to forward it. Because forwarding it is also giving attribute to whatever is being said, giving more credibility to it. And that adds to your history as well. तो आपकी social profile, मुख्तलिफ channels, पहले एक वक्त होता था where we wouldn't have these things, right? Where we had those dial-up phones, किसी का कोई record नहीं होता था. Now you have multiple phones, you have multiple social media accounts. और कई दफ़ा हम ये भूल जाते हैं, हम कहते हैं ओके ठीक है, हमारे पास वो एक फ़ोन था, उसके अंदर डेटा था, वो हमने फेंक दिया, वो हमने डिस्कार्ड कर दिया, मेरे पास वो फ़ोन नहीं है, but the data still remains. इसी तरीके से आप कहते हैं मेरी एक प्रोफाइल थी, वो मैं भूल गया हूँ, या उसे मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा, but it still exists, and that is something that can hurt you. So be very mindful whenever you post something,
whenever you say you do something, because that is building up your profile, and that's something that later on can both ways, it can help you or hurt you. अगर आप कोई केस फाइल कर रहे हैं, लेट्स से NIW नेशनल इंटरेस्ट वेवर, और आप कहते हैं मेरी इतनी पब्लिकेशन हैं, नेचुरली यू वांट टू मेंशन कि ये सारी चीज़ें, लिंक्डइन मेरा प्रोफाइल है, बाकी चीज़ें हैं, आई एम अ गूगल स्कॉलर, उस पर आप सर्च करें, ये चीज़ें मिलती हैं. सो इफ़ इट्स पॉजिटिव, इट डज़ हेल्प यू, but on the negative side, it hurts you even more. So you have to be careful that whatever you post is sort of a permanent record everywhere. कैसे आप पोस्ट कर रहे हैं, आप ये समझते हैं कि जी उससे मुझे क्या फ़ायदा या नुकसान मिलेगा. सो इन शॉर्ट, आई थिंक सो व्हाट वी ought to be very mindful is anything and everything that I'm posting, if I'm being asked. So I pose myself this simple question कि आज मैं अगर आपसे भी बात कर रहा हूँ और अगर मुझे कोई कहता है कि जी ये 10,000 लोगों में खड़े हो और बताओ क्या ये बात सही है, आई शुड बी एबल टू से येस. ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लोज रूम में हम 2 लोग बैठे और हम बात कर रहे हैं कि क्या हो गया. एनीथिंग दैट यू से, एज लॉन्ग एज यू फील कि ओपन पब्लिक में मैं ये बात कर सकता हूँ, इट इज़ गोइंग टू बी ट्रूथफुल, इट इज़ गोइंग टू बी ऑनेस्ट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, चाहे वो FBI चेक्स हों या कोई और हो. बट व्हाट आई मेंशन टू अर्लियर वाज कि ये जो FBI चेक्स हैं, दे कैन कॉज डिलेज. But delay is something you can live with as long as the matter is truthful. Problem तब आती है जब हम कहते हैं कि हाँ delay भी हो रहा है, but then again, you know what? I think so there is a skeleton in my closet which is going to hurt me. तो उस चीज़ से बचने के लिए, as long as your ducks in a row, you don't need to be overly concerned about that. Have documents with you, have your things with you, and the best way to do it is don't rely on other people to do your work. And I'll give a few examples. F1 स्टूडेंट है, आप किसी और पे रिलाई नहीं करें कि वो मुझे ढूंढ के देगा कि कौन से स्कूल में जाना है. E2 इन्वेस्टर है, तो वो ये नहीं कहे कि मुझे कोई बताए कि अच्छी इन्वेस्टमेंट कौन सी है. आपको खुद पता है क्या होना चाहिए, ऐसी क्या चीज़ जो आपके लिए फ़ायदेमंद है. You have your own life. You are responsible for your own life. You can take different references. You can take advice, but don't rely on that until your own heart is convinced. आपने अपने आप को बताना है कि जो काम मैं कर रहा हूँ इसकी responsibility मुझ पे है. And as long as that is there, whether it's an FBI check, it's a regular check, anything, you don't need to worry about that, because you know deep inside that what you have done is truthful, is honest, and can be verified at any single time. And that's what we also do. हमारी कोशिश ये होती है that we start off with consultations and we don't have free consultations. मकसद ये होता है कि हम तफसील से बैठें, ये देखें कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आइंदा चल के आपको नुकसान दे. And as they say, you shouldn't hide anything from your lawyer, because the more you discuss it, the more you're open, the more the lawyer is able to help you in undoing what is done. If there is a rational answer for what you did, then it's understandable. I always tell people कि जी it's good to be wise, it's good to be smart, but not over smart, it just hurts you. हम अक्लमंद हैं, दानिशमंद हैं, वो ठीक है, अपने लिए भी भला है, दूसरों के लिए भी है. लेकिन जहाँ आप ये कहते हैं ना कि जी मैं ओवर स्मार्ट बन जाऊँ, मैं दूसरे को ना बताना चाहूँ, some people fall for it, but in the long run it hurts you. And that's where these FBI checks, these other things come up, and they dig deep. They dig into things which earlier they wouldn't do it because of technology, because of things that are going on right now. So be mindful. Be a good person, not to anybody else, but to yourself. Help yourself. Be honest with yourself and do things which you feel are going to help you, and not only you, even your kids in the future. Because again, mind you, we have had cases कि जहाँ पे एक 4 साल का बच्चा, उसके माँ बाप उसे US लेकर आए थे, वो डिपोर्ट हो गया. But guess what? बच्चा तो वही है ना. वो बच्चा जब अभी 25 या 28 साल का हुआ और उसके लिए हमने केस फाइल किया, हमें बताना पड़ा कि येस आई वॉज डिपोर्टेड अर्लियर, चाहे वो 4 साल का बच्चा था और उसके माँ बाप उसे लेकर आए थे. तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आप करते हैं उसका इम्पैक्ट सिर्फ आप पे नहीं होता,
बल्कि अगली generations पे भी होता है. And that's what eventually this FBI check and other things are planning to look into. So if you ever get in contact with us, our goal is to help you overcome these issues. But even before contacting us or any other law firm for that purpose, what you should be mindful is keep your ducks in a row. Keep your documents with you so that you don't lose sight of them, don't lose touch of them as and when they are needed. It helps you, it helps your family, and it's just better for everyone. But thank you for joining, thank you for listening to all this, and would appreciate if you can give us your comments, let us know how you felt about that, and that helps us in giving more feedback and other topics that you would like to discuss. Because the goal, what we try to do is कि हम isolation में कोई चीज़ नहीं करें. We try to pick a topic, but then what we try to do is impregnate it with other connecting things, because then it all flows like a beautiful picture. And that's what eventually it is. One thing is not held in isolation, it leads to several connectors, and the end result is your better future. Thank you for joining. Your attorney, your immigration ally.